हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो लोग देखने जा रहे हैं वो नेपाल एक पवित्र स्थान किस तरह से है उसके ऊपर है। जिस तरह से माउंट कैलाश मतलब कैलाश पर्वत जितना पवित्र है उतना ही पवित्र नेपाल को भी माना गया है। नेपाल की जमीन, वहाँ की जो जगह है, वहाँ के जो स्थान है वो बहुत ज्यादा पवित्र है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं हमारे सदगुरु जी महाराज। जी हाँ, ये यूट्यूब चैनल है स्पिरिट ऑफ सदगुरु, फैन पेज है ये। लेकिन वहां पर जो सदगुरु ने अपने वचन कहे हैं, अपनी जो बातें रखी हैं नेपाल को लेकर के, वो पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है। और इसका टाइटल उन्होंने क्या दिया हुआ है? इसका टाइटल दिया हुआ है व्हाई नेपाल इज जस्ट एज सेक्रेड एज माउंट कैलाश। और जो इसका थंबनेल है, दिस प्लेस हैव स्पेशल एनर्जी, मतलब कि नेपाल में एक बहुत ही अलग सी एनर्जी है, एक डिफरेंट लेवल का है। सेक्रेट मतलब कि जो गॉड से कनेक्टिविटी रहती है। तो मतलब नेपाल एक ऐसी जगह है जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट भगवान से है, डायरेक्ट गॉड से है। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को, और वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कशन करते हैं नेपाल के बारे में, इस कनेक्टिविटी के बारे में, और क्या इसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो कितनी सच है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। The very psychology of a civilization was completely geared towards ultimate liberation. The large parts of India was like this at one time. Even now, for 98% of the population in Nepal, going to the temple and seeking their mukti is still the highest thing in their mind. One place that all of you must visit is Bhaktapur. It is one remnant of how this whole Eastern culture used to be at one time. All my life I thought, I'm very busy, I can't take time off, I can't do this, I can't do that. But this time I told myself, no, I have to do this, I'm going to do this. And I'm glad I actually took the time off and made this a priority. My great-grandmother was a fantastic storyteller. I enjoyed the stories, but I never would believe what she said. But after being to Kailash, I am willing to believe any grandmother's stories because it's too incredible. It's too fairy tale-ish for anybody to believe what is there. I would say the greatest mystical library on the planet. Beyond bliss, Kailash with Sadhguru. The very psychology of a civilization was completely geared towards ultimate liberation. The large parts of India was like this at one time. Even now, for 98% of the population in Nepal, going to the temple and seeking their mukti is still the highest thing in their mind. The whole geography of the place was created like a living body. They established, like how in the human body the energy centers are, like this they established these bodies. Many kings sponsored these great adventures of turning their whole kingdom into a spiritual body. Nepal is one place where it is much more alive, simply because the whole culture supported it. One place that all of you must visit is Bhaktapur. It is one remnant of how this whole Eastern culture used to be at one time. Bhaktapur means city of devotion. The town was created in such a way that you will not forget about the presence of the divine even for a moment. I want you to carefully keep your eyes open and observe. Every step is actually a temple. If you look this way, temple, if you look this way, temple. Every small utility is made like a temple. A water place is a temple. A washing place is a temple. A gossip center, a temple. But every step they made it a temple with a tremendous sense of aesthetics. चीज को बनाया उस तरीके से गया है। I want you to turn yourself back 1100 years ago, where mostly in this culture, women would always be in red. If you have red clothing, you should wear it when you're in Kathmandu. Oh. And men would always be in white. No automobiles, no commercial boards,
no other noises, traditional music. I want you to put yourself back, wear 1,000-year-old goggles and walk through the place and be careful enough to observe every step there is a temple, every step, so that no human being walks this space forgetting the presence of the divine. The idea is that you're in a constant reminder that you never go off. If you remain in that state for a period of time, rest you don't have to worry. Everything will open up in the universe, everything. Everything that's worth knowing will open up for a devotee if he just allows himself to soak in it. You don't have to turn it on, you don't have to turn it off, it's simply on, on, on. Just getting yourself to that state is what is important. The language, the culture, every aspect, sitting, standing, is about devotion out here, because we always recognized emotion as a much, much more powerful and more intelligent system than the intellect, always. Being here in Kathmandu, just walking on the streets itself is a devotional experience. Especially the people here are so simple, humble and highly devoted. I think it's a great opportunity to soak in this vibrant culture. This is my first time in Kathmandu, and we came to the temple right after we got out from the airplane. And once we step into the temple, we know that we don't want to go anywhere else. Really can't explain why I want to be here. It's just a burning desire that I've had ever since I knew that this could be a possibility for me, and the desire has never left me. It's just the first day, and as soon as you came here and we did our sadhnas today in the morning, suddenly everything has changed. I feel more settled. Well, people say this is a once-in-a-lifetime experience. But to be honest, it's actually much more than that, at least to me, because you don't encounter a living guru who's as powerful as Sadhguru for thousands of years. Sadhguru Ji Maharaj. कितना खुशी मिल रही है यार अंदर ही अंदर देख के। नमस्कार। Kailash, though it is a physical presence, for those who are willing, it's not in Tibet, it's wherever you want it. All very powerfully energized spaces are like that. For those who are willing, it's available wherever, because there is no here and there for that which is boundless. So pilgrimage is about turning inward. Don't make this into some kind of a duet. Doesn't work like that. It'll become a social process. Spiritual process you can only do within you. What you do around you is for support. But you should not need support within yourself, because that's not how life is made. That is anti-life, I want you to know. The moment you think how you are needs to be supported constantly by somebody, you have turned against your own life. Yeah, I want all of you to be together, but it's good to be by yourself. Even here, create an atmosphere of striving rather than of company and relaxation. These 15 days, just make one priority, that you need to break some limitation within you and experience something little more than what you are right now. We want you to become a striving, a very strong striving. If you are striving, who can stop you? Nobody can stop you. That's the beauty of this. Because there is nobody else here but you, once you turn inward, nobody can stop you, because nobody's there. Wonderful life, isn't it? As we go into the mountains, whatever we say about it is meaningless. So tomorrow we're flying to Nepal Ganj, and from there we're driving. All my life I thought
I'm very busy, I can't take time off, I can't do this, I can't do that. But this time I told myself, no, I have to do this, I'm going to do this. And I'm glad I actually took the time off and made this a priority. खत्म हो गया वीडियो यार भाई साहब, मतलब वीडियो खत्म हो गया और पता भी नहीं चला। एंड तक वीडियो देखा और फिर एंड में एकदम से सदगुरु जी ने नमस्कारम किया और वीडियो खत्म हो गया। मैं तो इतना लीन हो गया था, इतना प्यारा म्यूजिक चल रहा था, इतनी शांति, इतना पीस मिल रहा था ना कि क्या मैं बताऊँ आपसे। जब यहाँ वीडियो देख के इतनी शांति मिले तो वहाँ पर लाइव बैठ कर कितना मज़ा आता होगा, कितनी शांति मिलती होगी। और जिस तरह से उन्होंने नेपाल के बारे में बताया कि वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप जाओगे, बख्तापुर करके उन्होंने बताया, और वहाँ पर हर एक जगह ऐसे लगेगा कि ये टेम्पल ही है। मतलब पानी पीने जा रहे हो वहाँ टेम्पल है, गॉसिप करने जा रहे हो वहाँ टेम्पल है, कपड़े धोने जा रहे हो वहाँ टेम्पल, हर जगह उन्होंने इस तरह से बनाया हुई चीज़ों को कि वहाँ पर हर जगह आपको मंदिर ही मंदिर दिखेंगे। और उन्होंने बताया कि अगर आप 1100 साल पहले चले जाओ, वहाँ पर जो काठमांडू में जो औरतें होती थी वो मेनली लाल कपड़ा ज़रूर पहनती थी, और जो लड़के लोग होते थे, जो मेल होते थे, वो वाइट कपड़े पहनते थे। और क्या वहाँ का माहौल रहता होगा, जो प्योर म्यूज़िक, प्योर साउंड वहाँ पर चलता होगा, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, प्योर वहाँ पर साउंड म्यूज़िक। और लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी हो जाती है भगवान के साथ, कितने लीन रहते हैं। तो भाई साहब ये सब देख के ना दिल एकदम शांत हो गया, एकदम खुश हो गया मन, क्योंकि जितनी खुशी मिल रही थी देख के अंदर ही अंदर, इतना अच्छा लग रहा, इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि मतलब मन ही नहीं कर रहा इस वीडियो को अपनी आंखों से दूर करने का। आपको क्या लगता है, नेपाल में जो लोग रहते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या नेपाल सच में ऐसी सेक्रेट जगह है? जिस तरह से उन्होंने कंपेयर किया माउंट कैलाश के साथ नेपाल को, क्या सच में नेपाल इतना खूबसूरत और इतना शांतिपूर्ण है? लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो नेपाल में कुछ अलग ही चीज़ चल रही है। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र को लेकर के वहाँ पर झगड़ा चल रहा है, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी पवित्र जगह पर ऐसी चीज़ें हो, ये शोभा नहीं देता। तो मैं तो बस यही चाहूँगा जल्दी से जल्दी जितने भी इश्यूज़ हैं नेपाल के, वो सारे के सारे सॉर्ट आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए, और नेपाल जैसे पहले था इतना सेक्रेट प्लेस, जिस तरह से उसको इतना पवित्र स्थान मानते हैं इंडिया के लोग, वहाँ पर जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वहाँ पर प्रेयर करने जाते हैं, नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं। तो इसी तरह से रिलेशन बना रहे और आगे चल के फ्यूचर में दोनों देश एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। बाकी आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इससे रिलेटेड और कोई वीडियो है तो उसका लिंक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टा फेसबुक मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी मैं रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोगों का शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यहीं बरकरार रखिए और वो जो है सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और ढेर सारी वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों का शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धमाकेदार पॉप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।